Okay, okay, okay. Let's get to the explanation part. So, first of all, the question remains, what is a palindrome? On a very high level, palindrome is something which could be read the same way as right to left and then from left to right. Okay, so it's how do we check if the given string which we have as of now in the form of this kind of example, whether it is a palindrome or not? Okay, so let's break down this question into step by step. तो सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें कुछ अपर केस लेटर है एंड उसमें कुछ लोअर केस कैरेक्टर्स है, उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, कुछ स्पेसेस है. सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये मेरा जो पूरा का पूरा स्ट्रिंग है that is supposed to be alphanumeric first and foremost. So the moment we say that it is supposed to be alphanumeric, so by default ये जो comma है, blank spaces है, colon है, ये सारा is supposed to be removed. Okay, so first thing we need to do is to normalize this string. Normalize थोड़ा सा fancy term हो गया, but the point is कि we need to remove these extra characters, that is commas, spaces, colons, and we have to make this whole string as a small case character only string. If this is sorted, so for example हमारे पास इस अगर example को consider करें, let's say फिर we have this string uh, a man, a plan, a canal, Panama. Okay. Now, if we remove the extra characters and spaces, and so first of all, if we make it all in small cases, then it would look something like this, right? And a canal, then we have a colon, then we have Panama, something. Now, the next thing we can do is we would be removing the commas and spaces and colons. Then how is it supposed to look like? Something like this, something like this, something like this. Now it is अगर इसको हम लोग लेफ्ट से राइट साइड पढ़े या राइट से लेफ्ट साइड पढ़े, बात एग्जैक्टली सेम होने वाला है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से वी हैव अ वर्ड नेम रेस कार, or let's say we have a word named wow, and let's say we have a word named mom. So that's all I can think of as of now. So if you look closely, even if you read race car from left to right, it is going to be race car only. And even if you read it from right to left, it is going to be race car only. Similarly for wow, W O W, or from right hand side to left hand side, or same for mom. So that's what a palindrome is. So it is not only specific or not limited to strings or characters. ये digits का भी हो सकता है. So let's say we have a, let's say 4, ये हो गया 12421. So this is an example of a palindromic number. This is a palindromic number. So in our context, as with respect to this question, we are supposed to check whether a given string is palindrome or not. और अगर palindrome or not check करने से पहले, what we need to do is we need to normalize this string, right? Now अब जो हमारे string को हम लोग normalize किए हैं, that is this string को, ये हो गया normalized string as per this example. एक सिंपल तरीका ये है कि हम लोग इसको लेफ्ट से राइट एंड तक स्टार्ट करें, दोनों पॉइंटर्स को कंपेयर करें, और कभी भी लेफ्ट और राइट पॉइंटर पे जो कैरेक्टर हैं जो वो मैच नहीं करते हैं, तो हम इमीडिएटली फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, ओके, लेट्स टॉक अबाउट we were discussing race car, right? Let's say this was not race car, this was let's make it uh,
E, let's make it G. Okay. Now from left to right it is race car, and if we make it right to left it is going to be RACEGAR. ओके, नाउ ये दोनों इक्वल नहीं है। सो द मोमेंट हम लोग तो वन बाय वन एक एक करेक्टर को रीड कर रहे हैं, तो एक स्ट्रिंग को सीधा रीड करना है, एक स्ट्रिंग को उल्टा रीड करना है। द मोमेंट कोई भी कैरेक्टर मिसमैच हो, बाय डिफ़ॉल्ट विदाउट एनी थिंकिंग प्रोसेस हम लोग को उसको रिटर्न कर देना है फॉल्स करके। अगर ये समझ आ गया है तो दो तीन चीज़ हम लोग को यूज़ करना है। जैसे हम लोग यूज़ करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, एक स्ट्रिंग जो इनपुट मिला है और एक रिवर्स स्ट्रिंग हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले जब हम लोग स्ट्रिंग को प्रोसेस जब करेंगे, हर एक करेक्टर को चेक करेंगे कि वो अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर है कि नहीं, और अगर है तो उसे हम लोग लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं, और इस चीज़ को हम लोग एक स्ट्रिंग बिल्डर के थ्रू स्टोर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग दो पॉइंटर यूज़ करते हैं, एक लेफ़्ट पॉइंटर जो स्टार्टिंग में रहेगा, और एक राइट पॉइंटर जो राइट साइड के एंड से स्टार्ट होगा, एंड इवेंचुअली लेफ्ट वाला पॉइंटर आगे बढ़ेगा, राइट वाला पॉइंटर एक एक स्टेप पीछे आएगा। और हम लोग हर टाइम में एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, और एंड ऑफ द डे वी आर कंपेयरिंग वेदर दे आर गेटिंग कंपेयर एग्जैक्टली मैच्ड और नॉट। टॉकिंग अबाउट द टाइम कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लेक्सिटी इसका होने वाला है ओ एन होने वाला है, ठीक है, जिसमें एन जो है मेरा स्ट्रिंग का लेंथ होने वाला है। एंड सो लेट्स गेट टू कोडिंग। ज़्यादा कुछ है नहीं, पैलिंड्रोमिक क्वेश्चंस है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब जब बात आया है तो व्हाट डू वी हैव एज ऑफ नाउ, मेरे पास स्ट्रिंग पास कर दिया गया है। we discussed previously we would be using string builder, and then we would be using we would be normalizing the string. So what I actually mean to say is, first of all let's build our string. Builder, this is sign, ठीक है। तो मेरा जो फाइनल स्ट्रिंग होने वाला है, इट इज सपोज टू बी नॉर्मलाइज स्ट्रिंग। नाउ लेट्स रीड वन बाय वन द कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग फॉर सी। So we converted the whole string into an character based array. So now let's say character, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि अगर लेटर या डिजिट तो नहीं है। अगर लेटर या डिजिट है then what do we need to do, we need to skip those character, right, in order to bring our build our new string. Now our newly created normalized string is not supposed to have any kind of special character or digits, so we would be skipping those values while creating our normalized string. तो सबसे पहले या कैरेक्टर मिला है, अगर ऐसा है तो normalized, this would do the job, yes, this is done. Now string normalized, what was the spelling, normalize the string, sorry. Now int starting from the left hand side, and int right starting from the right hand side, normalized, start एंड से शुरू करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। आई होप कि आपको -1 का रीज़न समझ आ रहा है, क्योंकि इंडेक्सिंग इसका 0 से स्टार्ट होगा। सो इफ़ अ स्ट्रिंग इज़ हैविंग द लेंथ एज लेट्स से टॉकिंग अबाउट रेस कार, तो अगर इसका लेंथ बाय डिफ़ॉल्ट 7 है, राइट, एंड इंडेक्सिंग वाइज द लास्ट कैरेक्टर इज सपोज टू बी 6,
तो इंडेक्स वाइज इसका लास्ट कैरेक्टर 6 होगा और पोजीशन वाइज लास्ट कैरेक्टर इसका 7 होगा। अगर ये समझ आया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग को क्या करना है, लेफ़्ट राइट को कंपेयर करना था, राइट। तो वाइल लेफ़्ट ग्रेटर देन राइट, सॉरी लेस देन राइट, मतलब हम लोग लेफ़्ट से राइट साइड मूव कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम नॉर्मलाइज डॉट कैर एट लेफ्ट not equals to normalized dot char at right, ये टाइट हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग को क्या करना है, रिटर्न फॉल्स। मतलब इन इन एनी केस अगर कोई कैरेक्टर किसी से मैच नहीं कर रहा है, वी आर सपोज टू एंड इट एट दैट मोमेंट अब्रप्टली और निकल लेना है। ये अगर समझ आ गया है, अब क्या करना है, हम लोग को लेफ्ट का कैरेक्टर को आगे बढ़ाना है और राइट वाला जो पॉइंटर है उसको एक स्टेप पीछे एक कैरेक्टर पीछे लाना है। अगर ये समझ आ गया है तो हम लोग करेंगे रिटर्न। व्हाट आर वी सपोज टू रिटर्न, वी आर सपोज टू रिटर्न, ओके, वी आर सपोज टू रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स ओनली, ट्रू। अगर सब कुछ सही हुआ तो ये मेरा ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो मेरा ये फॉल्स होगा। नाउ लेट्स रन इट और देखते हैं क्या आता है। कुछ इश्यूज होगा तो वी वुड बी रिजॉल्विंग इट। स्ट्रिंग नॉर्मलाइज्ड, ओके, स्ट्रिंग का गलत स्पेलिंग है। स्ट्रिंग, देखते हैं अगला क्या इशू आता है। बैड ऑपरेंड्स, ये एग्जैक्टली, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट सपोज टू बी डन। यहाँ पे क्यों -1 लगेगा? दैट वाज टू कन्वर्टिंग द स्ट्रिंग इनटू एन पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू, राइट। सो उसमें माइनस लगा के आपका मतलब नहीं बनता है। एनीवे, सो द सॉल्यूशन इज करेक्ट एज ऑफ नाउ and let's submit it and let's check the time complexity and space complexity. So memory wise 44%, fine then, thank you.